Hello everyone. So in this video we will just try to make internal hard disk of Dell Inspiron laptop, and I believe it will work with any other laptop, in fact HP or Lenovo, though I haven't tested with those, but yeah, it definitely works with Dell. We just need to have an external component to get things started. I've bought it offline, but I'll surely share the link of this external enclosure, and it says it's 2.5 USB 3.0 HDD enclosure, so it may not work with SSD because the connectors are different. So yeah, that's the initial context, so let's get started. So as you can see, this is my old Inspiron laptop. It is a really good laptop, I'll say. मतलब इसमें बहुत सही फीचर्स थे, and I mean in terms of speed and application load and all those things, ये काफ़ी सही चला. So I मतलब अब तो शायद ये मॉडल आना बंद हो गया, but yeah, this gave me that trust जो कि Dell पे आया. So that was but anyways, okay. तो सबसे सिंपली फर्स्ट वी विल जस्ट गो, और हम सबसे पहले इसका वो खोल देते हैं बैक कवर. सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमें बैटरी मिलती है, ये बैटरी लॉक है. देन यहाँ पे सर्विस टैग एंड ऑल दोज थिंग्स. यहाँ पे वेंट्स हैं, अगेन यहाँ पे वेंट्स हैं. दिस इज द फैब्रिक मिसिंग. अनफॉर्चुनेटली मेरे केस में these screws are missing, but for you, if it is a new laptop or whatever, like you can see a lot of things are missing, these rubber pads and all, because it's a very old laptop. So I don't know, somewhere I misplaced them, but anyways. So yeah, in your case there must be these screws. So what you need to do is you need to have a screwdriver, and you need to just open these screws first before going further. So just please keep that in mind, because without that it won't open. So that is number one. And before starting anything, I'll say just remove your battery for the safety purpose. Although ज़्यादा कुछ होगा नहीं, but still I feel कि इसको मतलब वो करने देना. First you need to it's better to just go with that. So ये मेरी बैटरी है, so I'll just keep it now. Okay, now we are ready to go. So because again I'm repeating, मेरे केस में because this screw missing है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, बट आप कर रहे हो just go for those screws and then proceed. ठीक है. So I just try to open it very gently. मैंने बहुत चीज़ें रिप्लेस करने की, या तो मेरे केस में ये इजी भी ओपन हो रहा है, सो आपके केस में इट कैन बी थोड़ा डिफिकल्टी आएगा. सो जस्ट बट बी जेंटल, डोंट बी टू रफ ऑन इट. थोड़ा धीरे धीरे ऐसे आप देख रहे हो ना, बस स्लाइड करके ओपन कर रहा हूँ. दैट वे की वॉच होता है, तो ये ओपन हो जाएगा. ठीक है, मेरे केस में तो काफ़ी ईजिली हो जाएगा, बिकॉज मैंने फ़ैन वैन चेंज करने के लिए भी काफ़ी किया था. बट आप तो एज यू कैन सी यहाँ पे ये डबल साइडेड टेप यूज़ करते हैं. इट्स 1 grade लेस देन द इंडस्ट्रियल ग्रेड. इंडस्ट्रियल ग्रेड इज़ लाइक सुपर स्टिकी, वो बहुत स्ट्रॉन्गली स्टिक हो जाता है. तो येस, सो बेसिकली यू जस्ट रिमूव दिस. नाउ यू कैन सी देयर सो मेनी कंपोनेंट्स इन हियर, और ऑफ कोर्स लाइक हमें सबके लिए तो नहीं जाना है, बट जैसे कि वाईफाई कार्ड है, देन रैम है, एंड दिस मेजर थिंग, दिस बिग थिंग, ये हमारा हार्ड डिस्क है. ओके, so this is HDD. I am again repeating, this solution will work for HDD drives. I'm not sure SSD का कैसे होता है. In case future में if I use it, I'll make another video. But for now it's HDD. So because ये मेरा पुराना laptop है, and I want to take out the hard disk and use it as an external drive. Okay, तो मतलब पुराने components को use करके, and then we can just try to make the best use out of it. So for that purpose, so I'm highly मतलब मैं बहुत I won't say कि SSD के साथ नहीं वर्क करेगा, but that's not tested, so just keep that in mind before proceeding. Okay, तो आगे बढ़ते हैं. आप ये देख सकते हैं, ये इसका क्लिप है, इसको ऊपर की तरफ खींचना है मुझे ताकि ये लूज हो जाए, एज लाइक दिस. क्लियर? तो अब ये लूज हो गया, तो इसको कहीं का स्लाइड आउट कर देना है, एंड ये बहुत ही केयरफुली करना. और these components now, these are very sensitive, and we need to focus, and we need to just make sure कि ये trip ना करे, otherwise in long run it's going to be really hard on your pocket इनको रिपेयर करना, especially when your laptop is not in warranty. तो काफ़ी रिस्की है. अगेन मेरा लैपटॉप तो लॉन्ग बैक गॉन आउट ऑफ वारंटी, बट अगेन ओके, सो दैट इज़ वन थिंग. इसको ओपन करते समय प्लीज़ बी रियली वेरी वेरी केयरफुल. अब इन स्क्रूज को मैं ओपन कर दूँगा. आई थिंक दीज आर M2 स्क्रूज. सो क्विकली ओपन. ओके, और इनको आई सजेस्ट कीप दीज स्क्रूज सेफली समवेयर, सो दैट गोइंग अप. एंड अगेन बिकॉज मैंने बहुत बार ओपन कर रखा है, सो दे आर नॉट दैट मच टाइट. एज यू कैन सी यहाँ पे भी स्क्रू फॉर सम रीज़न मिसिंग है, ये वाला. सो आई थिंक इसको हम निकाल सकते हैं. सो ये निकल गया मेरा हार्ड डिस्क. ठीक है, ओके. तो अब इस हार्ड डिस्क को मैं जल्दी से इसको अनबॉक्स कर देता हूँ.
तो ये हमको मिलता है एक केसिंग के साथ और एंड इफ आई ट्राई टू ओपन दिस केसिंग, ये थोड़ा सा टाइट होगा, ये भी थोड़ा लूज है। इसको भी जेंटली, इन सारे कंपोनेंट्स को जस्ट ट्राई टू ओपन देम और यूज देम इन अ वेरी जेंटल वे। बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, लाइक स्मॉल ट्रिप्स कैन कॉस्ट अ लॉट ऑफ। सो इसके अंदर हमें ये USB केबल मिलता है फॉर हार्ड ड्राइव, एंड दिस इज़ द कनेक्टर कि हम अपने हार्ड डिस्क से कनेक्ट करेंगे इससे। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड अब मैं इन स्क्रूज को खोल रहा हूँ। ये थोड़े ज़्यादा टाइट होंगे बिकॉज इनको मैंने आज तक नहीं खोला। सो लेट मी ओपन दिस वन। I will suggest you should have a screwdriver set if you want to, like, if you are a enthusiast and you believe in upgrading the laptop rather than buying new one. Although I also favor that, but I don't want to mess because I have messed a lot of my cell phones and yeah, like the strip and all those things. But anyways, let's move ahead. So as you can see, इसमें हमें स्क्रूज ढीले करते हैं, तो ये मेटल की केसिंग है, ये बाहर आ जाने की चाहिए। सो बहुत ही जेंटली हम इसे रिमूव कर देंगे, तो ये होगा। ठीक है, नाउ ये देखिए आप, इसमें दिस इज़ द कनेक्टर विच वी नीड। इसको भी ये बाहर की तरफ पुश करेंगे बिल्कुल जेंटली, और ये अपने आप ही पता चल जाएगा कि इस एंड से निकलना है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइटली मैंने यूज किया, मुझे ऐसे इतने भी चीज़ नहीं मिलते, बट प्लीज़ भी केयरफुल। होपफुली इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा डैमेज नहीं आया। इस कॉम्पोनेंट्स आर सुपर सेंसिटिव, लाइक सीरियसली बहुत ही केयरफुली इनको हैंडल करना पड़ता है। Oh God, I was scared. Okay, so now let's move it into this casing. इस casing में हमारा यहाँ पे आउटपुट एंट्री है, so we'll try to put it like this. But before that, पहले हम ये लगा देते हैं ताकि हमारी लाइफ थोड़ी ज़्यादा सिंपल हो जाए। Yes, okay. ये थोड़ा फिट बैठ गया, तो हम ये देख लेते हैं। So ये बड़ा वाला स्लॉट इसमें जाएगा, so this should go like this, hopefully. And it's slid in, so hopefully it went properly, but just to cross check मैं इसको थोड़ा एक बार और ऐसे टेस्ट कर लूँगी। Okay, now simply इसको हम इसमें एनक्लोज कर देंगे। So let's use this guys very gently, or I think मैं उल्टा कर रहा हूँ। Yes, I'm sorry, it's supposed to go this way, it's supposed to go this way, and ये clipping sound देगा like this, so you can ensure कि ये properly चला गया। Okay, and as you can see हमारी ये hard disk ready है। So let me just test it with my system. Okay, मैं बाकी चीज़ें बाद में फिक्स कर लूँगा, पहले मैं क्विक टेस्ट कर लेता हूँ कि it is getting detected or not. सबसे पहले तो मैं इसको gently इससे connect कर देता हूँ। I think this way में होगा। यहाँ तक तो सब सही है। Okay, it's not going like this. And sometime, yes, so it's getting detected. And I'll just go and see what's the condition of my hard drive. So yeah, I think these two drives with my hard drive, I'll just open one of them, and as you can see I'm able to retrieve everything. So yeah, this was a very simple tutorial. I know इतना complex नहीं था, बहुत ही simple था। just that ये जो parts हैं इनको थोड़ा ज़्यादा carefully हमको देखना पड़ता है, so that we don't end up messing anything. And I will suggest कि इनको भी बाहर मत रखिए आप, इनको इसे connected रखिए, so that in future if you want it, it's easy to find and get things done. So yes, मैं इसको वापस से सीट लगा देता हूँ, इस clip को ये clip हो गया।
सॉरी दिस वे। तो ये मैं लगा दूँगा और बाकी जो 4 वो हैं स्क्रूज आई विल सजेस्ट कि उनको प्रॉपर्ली नहीं पे रख दीजिए, बिकॉज ये 4 तो आप अंदर भी निकाल सकते हैं। कीप देम समवेयर सेफ, इन केस फ्यूचर में अगर अपडेट्स या फिर बेसिकली वापस इसमें डालना हो, विच इज़ लाइक वेरी अनलाइकली बट स्टिल ठीक है। तो मैं क्विकली इसको क्लोज कर देता हूँ। वैसे तो you can use the RAM also, you know, to upgrade in your new system, but generally this particular laptop it has DDR3 RAM, and all the new systems they have like DDR4, so it's mostly incompatible. So that is one reason why I cannot use this RAM. It doesn't matter. You can like there can be multi-purpose. You can try to sell it somewhere, and if you know some good sites, just let me know also. But I think this RAM is going to be useless after this, because new systems are having DDR4 version and it's incompatible. So yeah. Anyways, so अभी मैंने हार्ड डिस्क रिमूव कर दिया, तो I don't मतलब anyways I mean it won't work and all that, but yeah, let's go to the office. Again close करने में वो clipping sound आएगा, just make sure कि हर एक से किया okay, and we are almost here. Yes. Now if you just go from this side, if you see any unevenness, like for me it's and here, just try to press it exactly at that point. So yeah. Yeah, I think that's it. So this is done, and finally so yeah, that is all about this video, guys. I hope this was helpful to some of you or whoever have watched it, and yeah, like I'll put the link of the connector module in the description and like all those things, and let me know if you want any additional help. Just comment down below, and yeah, I hope this helps, and let me know if you have any other questions related to these things. I'd love to know.